चल किथा गुसाई आई रात बैठा जीत लीला Okay, so I think I'll just start with the book first, and you guys saw the video and the song. Basically, I think this song perfectly encompasses what this book is about. It's called Majazi Khuda, and it was in the video, okay, to be a woman is to wait, and it's a very complicated emotion to express and write down about. I'll try my best. So basically, this book is about a woman and several women and all women trying to understand the other gender and the gap, the distance, the lack of understanding that we have with each other. This book tries to just narrate that mind, that thoughts that are going within that woman. So the reason I named it Majazi Khuda is that often how women even understand God is through the idea of a man, because God seems to represent all of those things. Seems to, I don't think that's the actual truth, because हम authority या material जो word है ना, उसको और उसके अंदर जो सब स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है या जस्टिस है, वो सब कुछ जैसे हम दुनिया में समझते हैं ना जिन जिन स्ट्रक्चर से, तो हम उसी समझ को खुदा पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. और स्पेशली थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन हम ऑब्वियसली अथॉरिटी फिगर्स और पावर स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड होते हैं, तो हम मर्द और खुदा को कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस रिश्ते के अंदर ना, कभी मर्दों के साथ के रिश्ते में हम खुदा को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं या कभी मर्द को खुदा बना लेते हैं, और उस मजाजी खुदा से इंसान की तरफ आने का वो जो रास्ता होता है और उसके अंदर जो जो इमोशंस आती हैं वो मैंने इनमें एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्रेस. बेसिकली जैसे नीचे मैंने एक टैगलाइन लिखी हुई है, एन एंटीडोट टू मिसहैंडलिंग. तो अगर आप लोगों को पता होगा आजकल ये वुमेन मैन डिवीज़न और मैन हेट्रेड या मिसोजिनी या वुमेन हेट्रेड, ये चीज़ बहुत चल रही है आजकल. और अगर कोई मिसोजिनी पे बात करता है तो लोग कहते हैं ये तो मर्दों से नफरत करती है, और अगर कोई मिसहैंडल पे बात करता है तो फिर वो कहते हैं कि तुम औरतों से नफरत करती है. तो मैंने खुद ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया. मुझे लगता है एट सम पॉइंट आई वाज अ मिसहैंडलिस्ट माई सेल्फ, but it's not like man hatred. I've tried to express what it actually was and my journey to humanize men in my own mind and also to understand God. So I would mind of a woman and through the life of a woman, it does feel like that. So sometimes that distance almost represents our distance with God too, क्योंकि हमें नहीं पता कि खुदा क्या है. So it's also like कि I just say an excerpt. It's been millions of years since we stumbled into existence and became separate. So I took it to the very beginning of time कि जब आदम और हव्वा थे और जब वो जन्नत में होते थे तो कैसा होता होगा, और जब हम दुनिया में भेज दिए गए तो हमारी सेपरेशन हो गई. यूनियन. Have you ever wondered what it was like when our hands were glued to each other? There were no words required for communication. We were one. You wandered far. You found refuge in hatred and disdain. I knew you were pain. You wanted to belong. So you made a little world of your own. You became your very own God. अब ये जो particular paragraph है ना, it represents a lot of things. Basically, I have this idea that this sense of belonging जो हमें आपस में हमेशा फील होती है, पर हम उसको भी उस डिस्टेंस को ब्रिज नहीं कर सकते. Sometimes it very much represents our lack of connection with God, and कभी कभार ऐसे भी लगता है कि when we try to think about why we came to existence, why God made us, it's like God was alone.
what he could have done, he was alone, he made sort of someone to belong with, but he doesn't need us, but we also belong to him. So in a way he also belongs to us, right? So it represents that too, but also with like the idea of men and relationship between man and women. लेकिन अब जो ये पैराग्राफ है ना, इसका ये एंड पे आ रहा है बिल्कुल, और इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये मिसहैंड्री कैसे वो शुरू होती है. लाइक अभी तो आप वो सारी इमोशन से गुजर रहे हो ना कि आपको समझ नहीं आ रही, यू वांट टू कनेक्ट, यू वांट टू बिलोंग टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड द मैन अराउंड यू. लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि वो मिसहैंड्री की तरफ चला जाता है, मैन हेट्रेड या बिल्कुल यू नो. तो आई स्टेयर इन वेन, your face impassive, your limbs apathetic. I stare at my own hands, weak, brittle, deformed. We are not one, but two. I am in constant nostalgia of the time when there were no shapes, no reflection. My eyes didn't long to meet yours. You were a part of my own. There was no I, no you. There was no question, no need for communication, no limbs, no body, no soul. ठीक है, अब बिल्कुल इसके एंड पे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑफ दैट पर्टिकुलर हेट्रेड, बट इट्स नॉट रियली हेट्रेड, आई वुड से इट्स like a fool I watched half my life sweep away, one wishful night after another, one illusion followed by ceaseless more. I fall ill to my own heart, but no avail, there is no mercy. For unison I hope and lead, yet it leads to nothing. My tireless fate rots me until the last bit of longing evaporates. The day eventually comes when your steps no longer tug on my heartstrings. Your listless eyes peer into mine, but my numb heart doesn't skip a beat. I free myself of hope and find solace in separation. And we become estranged. So this particular chapter is basically talking about that birth of hatred and that birth of completely not knowing who that other gender is to you, and in a way almost it represents one separation with God too, because it's like आपकी suffering जब you are going through life, कई दफ़ा when you are in extreme grief and despair and hopelessness, तो आपको लगता है कि मतलब क्यों है ये सब कुछ, right? And वो feeling, it's not like saying it's meaningless or anything, it's just representing that feeling. And इस book में basically मैंने ये different chapters बनाए हुए हैं which are completely different from each other, and it's like one is about the relationship between a son and a father, and abusive father, and a son who later on grows up to become abusive, and how he tries to run away from that reflection of his father but he can't. Like इस तरह का एक और chapter है which is about the relationship between a daughter and a father, in which a daughter cannot connect with her father because उसके father का love सिर्फ material चीज़ों में है. तो she always thinks of him as this like emotionless being जो सिर्फ उसको material चीज़ें दे रहा है, लेकिन उसके father की जो सारी ज़िंदगी थी वो रिड्यूस कर दी गई थी सिर्फ प्रोवाइड करने में. इट वॉजंट द फॉल्ट ऑफ द फादर दैट उसको लव समझाया ये गया कि तुम्हारा मकसद ही ये है कि तुमने घर बनाना है. तो उस चैप्टर का नाम दिया मैन इज अ हाउस. बेसिकली इन विच आई ट्राई टू शो कि ही बिकम्स द हाउस, ही बिकम्स द फिजिकल थिंग हु कैन नॉट इमोशनली कम्युनिकेट दैट लव बिकॉज टू हिम दैट इज द लव. बट this is a very like emotionally charged book, I would say. Like it's a usually what I actually write is fiction, and usually ghost writing वही freelance writing on Upwork और वो गोरों के लिए कम रेट्स पे वो इस तरह की रेटिंग में करती हूँ. तो this was my first like published work and it was very different from what I usually write, and इसको लिखना भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि it's like pure raw emotion जो कि मतलब I experienced myself, and ऐसे था कि there was a point when misandry was something I would say I was suffering from, and I thought it wasn't right कि एक entire gender है उसको हम humanize ही नहीं कर पा रहे, and it's not our fault, especially like if you go through a lot of trauma, a lot of women do, or you even secondary trauma, जैसे आप like हमारी न्यूज़ में इतना हमें देखने को मिलता है कि
वन मर्डर आफ्टर अनदर, वन रेप आफ्टर अनदर. आप अगर बहुत फीलिंग इंसान हो तो आपको वही चीज़ बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हो. So there was a point, especially in last year, when I started feeling this very strong aversion, and it never was hatred, it was just fear and misunderstanding of what men are. And I think this book kind of tries to deconstruct like हमारा अपना idea of manhood. It's like they are human beings that have been given roles to play that sometimes make them into not even human beings for us, but in the end they are also human beings that are suffering from the same structures that we are. और इसका last chapter है ना, it's my favorite chapter, and it was very hard to write because it was the only like positive chapter of the entire book. And it says man is kind, man is hope. So in this chapter I go through like all the kindness and the hope that I've been given in the world in good people, and in people especially जो ये एक प्री कंडीशन चीज़ें जो उन पर अप्लाई की होती हैं कि तुम ये हो, तुम्हें यही करना है, तुम ये नहीं कर सकते. ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको तोड़ के अपने आप को एक्सेप्ट किया और ऑथेंटिकली लिव करने की कोशिश की, और वो औरत हो या मर्द हो, जो लोग ये करते हैं, दे आर द ब्रेवेस्ट पीपल. एंड या सो दैट्स द बुक. पर so I was going to like talk about basically the process of writing in general, like what I think is the most important thing. जैसे आप सारे like I don't think I dominated. yeah. So honestly, चलो मैं अपना introduction proper भी दे देती हूँ. Like I'm still a student. I'm still a student. I'm 21 years old and I'm studying in Punjab University. And also I remember you made a video about the meal, right? ये वो हम सब ने share की थी क्योंकि it was so like resonated a lot with us. And yeah, so the meal is basically I don't think कि मुझे जमीयत के बारे में rant करना चाहिए यहाँ पे. But it's like this very Islamist, extremist किस्म की organization जो पंजाब यूनिवर्सिटी में exist करती है, और छोटे से छोटे मसले पे वो ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं, और कभी बिरयानी के प्लेट पे लड़ रहे होते हैं और तोड़ फोड़ हो रही होती है. और मैं हूँ भी लॉ कॉलेज से, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इफ यू गाइस कैन सी इन दिस बुक के मतलब मैं वो एक्सट्रीम इमोशन मैंने फील भी इसलिए की क्योंकि मैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम सेक्टर में रही हुई हूँ वेयर men seem like this beastly things which men are not, but in that particular sector they are not very humanized at all. तो वो उसको करना तो और भी मुश्किल हो जाता है. एंड वो ऐसी मतलब स्पेसिफिकली हमारी यूनिवर्सिटी एंड हमारा कॉलेज ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी करना इज लाइक हराम एंड फहाशी. लाइक कुछ भी, कोई भी इवेंट, किसी भी किस्म का इवेंट, लाइक स्मॉल फोटोग्राफी का इवेंट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो या बट द थिंग इज कि what I think about writing is that I've always been writing ever since I was a kid. I think like maybe 8-9 साल की when I started writing my first story. Like I'm mostly interested in stories, and I would say that you should write it, and your first published work, which most of you guys already have, should be something that is very meaningful to you. And the reason we even write is because we want to know we are not alone. Right? When I wrote this book, अब ये the book कई लोग जिनको नहीं पता था कि what it is about, and they're not like even they don't even understand any of these concepts. Like ये pure emotion है, तो when they read they feel what I have felt in one way or another in their own way, and that is so important to me. And I thought कि the reason I even wrote this was to connect with someone, to know कि I was not alone in my own emotions. And even men that have read this book have understood it and really liked it. Even men that don't consider themselves feminist or anything. This is not like a feminist book. It's just emotions and very human emotions that everyone feels. But I try to really go into it. So I think कि writing के लिए सबसे important चीज़ empathy होती है. Like I could have just gone off at men के men are this, men are that. But when I started writing, I started feeling so many things. And I started really feeling both sides of the argument and both experiences. और वो feel करना बहुत मुश्किल होता है, but it's a gift and it's something that should be channelized because like आम जिंदगी में ये empathy
या ये सेंसिटिविटी, इसको बहुत डिस्करेज किया जाता है। और मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि मतलब यू जस्ट लाइक डोंट फील सो मच, मतलब ओवर थिंक ना करो, सोचो मत। बट इन द एंड those are very valuable things. You should feel all of those things, and if you feel in an intensity, so you should try to connect with human beings. And this is basically like जो मेरी human connections अब हैं, if I can't like express those things in a day-to-day basis, if I can't do in conversations, I did it as a book. Like this is the conversation to the people that I couldn't understand otherwise, but now they can in a way. So basically I feel like writing should be that a way to connect with people, and also a way to make someone else feel less alone. Like it should be the desire to empathize with not just yourself but someone else too, and then in the end it helps you discover something really closeted about you. आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो लिखते लिखते वो बाहर आए, और वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके अलावा आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक दास्तान, बिकॉज लाइक आई डोंट इवन हैव दैट मच, लाइक आई डोंट मेक दैट मच मनी टू इवन पब्लिश एनीथिंग, तो इट वाज वेरी helpful for me to find a platform to do that. So I would definitely like to write more through this platform too, because like mainly like I told you guys कि I write fiction, तो मतलब मेरे दिमाग में in fact पहले एक fictional story थी which would have these ideas. Basically वही चीज़ कि मुझे लगता है कि मुझे ना दरअसल ड्रामा उसमें देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे, I don't know why I have this like nostalgia with them, कि मतलब बचपन में देखते थे घर वालों के साथ, तो वो अभी भी जितने बड़े टॉक्सिक हो जाए मैं फिर भी देखती रहती हूँ, बिकॉज लाइक इट जस्ट फील लाइक चाइल्डहुड। तो लेकिन मैं फिर मुझे देख के मैं उसको करने लग जाती हूँ कि ये गलत है वो गलत है। तो आई वाज लाइक मतलब देयर शुड बी स्टोरीज दैट कम आउट इवन इन लाइक आवर जो मेन चैनल्स वगैरह पे भी हैं जो लाइक हमारी यूथ को टारगेट करते हैं, उनके असल मसले, लाइक हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या हम लाइक 20s में गुजर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला शादी नहीं है, हमारे क्लास स्ट्रगल्स हैं, वी हैव struggles with like our identity as people and our other connections like our friendships and our families, the generational gaps होते हैं, like there are so many ideas that could be written about but they're not, and you don't see yourself being represented. तो फिर आप जाके Netflix सीरीज जब देखते हो उसमें वो वेस्टर्न जो कल्चर है, it's like you don't connect with it, तो वो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो हमारी यूथ है वो उस तरह की चीज़ें देख के कुछ फिर उनकी आइडेंटिटीज और ही हो जाती हैं कि दे डोंट इवन अंडरस्टैंड, उनका अपने कल्चर से भी एक गैप होता है, और उस ऑब्वियसली दे डोंट लिव देयर, तो उनकी जो वो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर अमेरिका वगैरह में जहाँ वो लोग रह रहे हैं, उनके जो मसले हैं वो उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते, तो उनके आइडियाज बिल्कुल ही एक डिस्टोर्टेड वर्जन बन जाते हैं अपनी असल आइडिया जो उनके होने चाहिए। और इसी वजह से हमारा अपना वो जो रिच एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए थी वो नहीं करती, और लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटीज आर्ट से ही डिराइव करते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन माय सेल्फ टू। एक बस चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि देयर इज वन लाइन लास्ट मैसेज व्हिच यू कैन गिव बिकॉज़ सम ऑफ आवर अदर प्रेजेंटर्स आल्सो, सॉरी या आई मैसेज हैव टू गो क्योंकि हमारा हॉस्टल कर्फ्यू होता है और वो 6:30 बजे का, सो इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर यू। And yeah, so like I would just like to say that you should feel what you feel, and it's valuable to express it, and there will always be people that want to hear it and they will understand. So yeah. Thank you. Thank you.